Yesterday, a press conference was held by Shri V. Muralidharan at BJP headquarters, New Delhi. Now the people who have been arrested initially, one Swapna Suresh, one Sandeep Nair, one Sarit, but later on, their contacts came, it went up to the Principal Secretary of the Chief Minister of Kerala. Now, 4 agencies are conducting investigations into various aspects of this issue. One is the gold smuggling, which initially was investigated by the customs. Then, since it was found to be linked with financing terrorism, NIA took up that case on 10th of July. And then there were many other issues that came to the fore. Another issue that came up was a contract between the UAE consulate and a builder in Kerala for construction of houses for those who lost their houses during the floods. And it came to the, before the investigating agencies that Swapna Suresh, who was accused in the gold smuggling case, had received 1 crore commission. So naturally the Foreign Contribution Regulation Act came into the picture. CBI is inquiring into that. The Enforcement Directorate, ED, is inquiring into the money laundering aspects of the whole issue. Now, the gold smuggling, I would say that this is the first time that gold is being smuggled or gold is being captured by the customs in any of the airport of India or in anywhere in Kerala. But this issue that makes it distinct from other cases which has happened earlier is that this case is directly linked to the Chief Minister's office, and the Chief Minister has been changing his stand from the day the case was registered, people were caught, and till day before yesterday. Initially, the Chief Minister said that, I don't know who is this. I am not aware of that. Now he says that this lady who has been accused, number 1, has visited the Chief Minister's office, Chief Minister's residence, held consultations with the Consulate General many times. In the first day when the whole issue happened, the Kerala Chief Minister wrote a letter to the Prime Minister asking that any central agency may investigate about it. He didn't specify a particular agency. But now, when the investigation went ahead and the Enforcement Directorate, in the charge sheet that was submitted to the court, specifically mentioned that there are people who are influential in the government who are linked to this. There are very prominent people linked to this. The government of Kerala and the party which leads the government, they started finding fault with the agency. They started saying that this is a political vendetta. They started casting aspersions on the agencies. And during the course of the last 3 months, we have seen 2 instances wherein efforts were made to destroy the evidence. The General Administration Department of the Government of Kerala, which looks after the protocol, which looks after the discussions that
the government officials of Kerala hold with other foreign entities, that protocol department had a fire on 25th of August. The ministers, including the chief minister, said that it was a short circuit. But now we have the report of the forensic department of the government of Kerala, which says that the forensics laboratory very categorically says that it was not caused due to short circuit. This indicates that there was a deliberate effort on the part of somebody to destroy the evidence. The CCTV visuals, both of the chief minister's residence as well as the state secretariat, that was found to be lost. And now the latest thing, as the agreement which I mentioned to you, consulate and the builder, against that the CBI charged the builder as well as the Kerala government agency which entered into an agreement. And Kerala government goes to the court against CBI inquiry. The same government which welcomed, which demanded the government of India to institute an inquiry, they are now going to the court saying that the agency doesn't have the authority to investigate. This shows that those who are involved in the gold smuggling is hand in gloves with those who are in power. This shows that the links of the people who are directly accused of the crime, their links are not limited to up to the principal secretary, but it goes beyond also. One more suspicion that has come up, one more question that is being raised is, normally in every government in the various states, the principal secretaries to the chief minister, they hold the charge of that office only. They don't hold an additional charge of a particular department in the government. That is a general principle. But here, the principal secretary holds the charge of the electronics and IT department of the government of Kerala, and it is a well-known fact that chief minister has some relatives who are in the field of IT and electronics against whom there have been allegations. So the chief minister's confidence in the principal secretary, his close links with the principal secretary is beyond doubt. And when a principal secretary has been accused of supporting or in a way aligning with those who have been accused of gold smuggling, and that principal secretary has been suspended, even though the chief minister for the first days, 10 days the chief minister refused to do so, after that he had to do. Now the moral authority of the chief minister is lost. So the BJP has been demanding, the people of Kerala has been demanding that the chief minister should resign, owning the moral responsibility of the whole incident that has happened. So this is the scenario, this is the situation regarding the gold smuggling, which I would like to explain to you. Thank you, Mr. Minister. Thank you, Muralidharanji. And very soon the minister would be taking questions in this regards as well. But before that, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखना है। बंधुगण, आप जानते हैं कि अक्टूबर के 28 से बिहार में चुनाव आरंभ हो रहा है। बिहार में जिस प्रकार लोजपा अर्थात एलजेपी भ्रम और झूठ की राजनीति कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए आज कुछ विषयों को बहुत गंभीरता से पार्टी के इस मंच से हम रखना चाहते हैं। बंधुगण, स्पष्ट रूप से
भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि बिहार के इस चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसे हम कहते हैं और वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी का ही गठबंधन है। यही मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम स्पष्टतः बता दे, यह ऐलान करके बता दे, ना तो हमारी कोई बी टीम है, ना हमारी कोई सी टीम है, ना हमारी कोई डी टीम है। हम एक ही टीम है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम HUM हम और वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बिहार में सीधी सीधी लड़ाई दो गठबंधनों के बीच में है। मुख्यतः बीजेपी जेडीयू की गठबंधन जिसमें अन्य दो पार्टी भी हैं और आरजेडी के तेजस्वी यादव को मुखौटा बनाकर ये जो माले का गठबंधन है, उग्रवादी माले पार्टी भी उस गठबंधन में शामिल है और कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है। इनका जो एक गठबंधन है जिसको आज बिहार की जनता और भारत की जनता अपवित्र गठबंधन के नाम से जान रही है, उसके बीच में है। पवित्र गठबंधन वर्सेस अपवित्र गठबंधन, ये सीधे सीधे लड़ाई पवित्रता और अपवित्रता के बीच में है। क्योंकि माले का गठबंधन जहां हो, उग्रवाद का गठबंधन कभी पवित्र नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार का गठबंधन कभी पवित्र नहीं हो सकता है। बिहार में लोकतंत्र, विकास और स्थिरता के लिए यह चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां हम एक तरफ अपनी स्थिरता, पार्टी की, बिहार की स्थिरता, बिहार में लोकतंत्र, उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एलजेपी, लोजपा अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन अस्तित्व, फॉर देयर ओन वेलबींग। अपना अस्तित्व बचाने के लिए जिस प्रकार एलजेपी या लोजपा झूठ का सहारा लेकर आज सुबह से नाना प्रकार के इंटरव्यू भिन्न भिन्न टेलीविजन चैनल में दे रहा है, यह दिया जा रहा है लोजपा पार्टी की तरफ से, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। बंधुओं, बिहार में अनेक पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं जो हमारे पार्टी से भी अलग है। अकेले अकेले छोटे छोटे पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, पुष्पम प्रिया जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, ओवैसी जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एलजेपी को किसी भी और कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी स्पष्टतः अकेले इसी प्रकार, जिस प्रकार वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसको सामने रखना चाहिए। एक बात यह भी आप जान लीजिए कि वोट कटवा पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता है और वोट कटवा पार्टी के रूप में आज कहीं ना कहीं एलजेपी बिहार के लोगों के मन में और हिंदुस्तान के जनता के मन में भी कर चुकी है कि वो वोट काटना चाहती है और वोट कटवा पार्टी है। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी के इस बहुत महत्वपूर्ण स्थान से ये हम बता दें कि अक्टूबर 28 से जो चुनाव 3 फेज में बिहार में होने वाले हैं, उस बिहार के चुनाव में 3/4 बहुमत के साथ, 3/4 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और वीआईपी, ये जो हमारी गठबंधन एनडीए की है, हमारी सरकार बनने वाली है। एक स्थिर, एक मजबूत और एक विकासशील सरकार हमारा ये जो गठबंधन एनडीए का है वो बिहार को देने वाला है। कोई भी स्थान कंफ्यूजन के लिए नहीं है और किसी के मन में रत्ती भर भी संशय नहीं हो, इसलिए पार्टी ने इन विषयों को स्पष्टतः आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। I would request you for questions only pertaining to gold scam to the respected minister. Thank you. नहीं, सेंटर के तरफ से अभी मैंने जो कहा कि 4 एजेंसी इसके अलग अलग पहलुओं पर अभी जांच कर रहे हैं। जैसे कस्टम्स है, ईडी है, सीबीआई है और एनआईए है। और
इन हर एजेंसी उनके जो दायरे में जो विषय है उस पर जांच कर रहे हैं। जैसे कि कस्टम्स गोल्ड स्मगलिंग जो प्रत्यक्ष रूप से जो है उस विषय पर करने का अधिकार कस्टम्स का है, लेकिन इसमें आतंकवाद का जो विषय है उसको एनआईए कर रहे हैं। तो सीबीआई एफसीआरए का जो विषय है उसमें जिसका कोई राज्य सरकार की रिकमेंडेशन या हाईकोर्ट के डिसीजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एफसीआरए के विषय में सरकार यानी सीबीआई डायरेक्टली उस पर जांच कर सकते हैं, उस विषय पर कर रहे हैं। तो ये सारे जांच आगे बढ़ रहा है और उसमें चार्जशीट जैसे ईडी का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गया है और कस्टम्स का जो शोकॉस नोटिस का तैयारी में। Sir, you said that there are links to Dawood Ibrahim and everything is coming up. Now the question is why the Kerala government should not be dismissed, citing all these issues by getting a report from the governor. See, we don't. I don't think that has been the practice of the government led by Narendra Modi ji, because we are in a democratic mechanism. We are a democratic country. When there is a case, the case will be investigated, and when it is conclusively proven, then accordingly action will be taken. So the case will go on in the courts for a long time, and it will take a long time to conclusively prove and convict. So I mean, will you wait till then? No, I don't think that your assumption that the case will go on and on, I don't agree with that. समीर जी मुरलीधरन जी सवाल ये है कि जानकारी मिली है कि एनआईए और डीओपीटी की तरफ से केरला के जो कई टॉप ऑफिशियल थे उन्होंने फॉरेन कंट्रीज की ट्रिप भी की और उसकी प्रॉपर जो परमिशन होनी चाहिए वो उन्होंने नहीं दी। इसको कैसे? ये विषय जांच एजेंसीज के तरफ से उनके ध्यान में आया है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉग्निसेंस हैज बीन टेकन एंड अकॉर्डिंगली द रिक्वायर्ड एक्शन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। So the Chief Minister has been saying that the NIA is here to investigate, let him investigate, should they find any good PLC. So what is your complaint against the Chief Minister? That is what I am also saying. The Chief Minister's statement, I have the statements of the Chief Minister starting from 5th July to till day before yesterday. And he has been shifting the goalposts. Why he is now saying that why should the state government go to the court for dismissal and stay on the CBI inquiry if they have nothing to hide? जैसे आपने कहा कि इससे टेरर फंडिंग भी हुई, दूसरी तरफ क्या है केरल में लॉ जिहाद की बहुत तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं और भी अभी कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आई थी कि एनटीसीए जो प्रोटेस्ट हुए कुछ केरला से भी फंडिंग हुई थी। क्या आपको लगता है जो सोने की तस्करी से गोल्ड स्मगलिंग से जो पैसा बनाया जा रहा है वो इन गतिविधियों में भी खर्च किया जा रहा है? No, that is what that is why the NIA has taken up that case. That the money that has been amassed through gold smuggling, that is being used for financing of terrorism. That is why the inquiry is being done by the NIA. And I am sure that NIA will bring out the clear evidence of that. Thank you, sir. Thank you, friends. नीरज जी फाइनली नहीं, देखिए मैंने बिहार पे एक स्टेटमेंट पढ़ा है, आज का विषय गोल्ड स्कैम का था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ജൂലൈ മാസം 5-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 3 മാസക്കാലമായിട്ട്
വിവിധ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈ കേസ് പുറത്തുവന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എടുത്തിരുന്ന സമീപനം, ഞങ്ങള് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നവരാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും അക്കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് ഏജൻസി വേണമെങ്കിലും അന്വേഷിക്കട്ടെ. NIA അന്വേഷിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള നിലപാടുകളും പ്രസ്താവനകളുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ CBI ലൈഫ് മിഷനുമായിട്ടുള്ള യൂണിടാക്കുമായിട്ടുള്ള കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ CBI അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോ അതിനെതിരായിട്ട് കോടതിയിൽ പോയി അന്വേഷണം നിർത്തിവെപ്പിക്കാനും അന്വേഷണം റദ്ദാക്കാനും FIR ഉൾപ്പെടെ റദ്ദാക്കാൻ ലൈഫ് മിഷൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, FIR-ൽ ഞാനൊരു കാര്യം ആമുഖമായിട്ട് അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. FIR-ൽ ലൈഫ് മിഷന്റെയോ കേരള സർക്കാരിന്റെയോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും പേര് FIR-ൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. യൂണിടാക്കിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിന്റെ ഉടമകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും പേരുകൾ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള FIR റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം യൂണിടാക്കിന്റെ അഴിമതി അടക്കം സംരക്ഷിക്കാനും മൂടിവെക്കാനുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോയത്. കേരള ഗവൺമെന്റിനുള്ള കേസ് അന്വേഷണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഭയപ്പെടുന്നത് യൂണിടാക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള അഴിമതിയും യൂണിടാക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ സ്വപ്ന സുരേഷും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കമ്മീഷൻ കൈമാറിയത് എന്നുള്ള മൊഴി. ആ മൊഴി ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ച്, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അഴിമതിക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. ആരന്വേഷിക്കുന്നതിലും ഭയമില്ലാത്ത ഒരു സർക്കാർ എന്തിന് CBI അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കണം? ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടുത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ എടുത്തിരുന്ന നിലപാട് ആ തീപിടുത്തം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോധപൂർവം തീ കൊളുത്തിയതാണ് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ. 3. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലും പരാമർശിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരസ്യമായിട്ട് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു, എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു, അത് കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ കൂടിയാണ് വന്നത്, നിരവധി തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നതിന് എന്തായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വൈമുഖ്യം? ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ഈ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അവർക്ക് നൽകുന്ന സംരക്ഷണവുമാണ്. ഇത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭരണത്തിൽ തുടരാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വാദം, ആ വാദം ശക്തി പകരുന്നതാണ് ഈ നിലപാട്. നേരത്തെ പലതവണ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാക്കേജ് അല്ല എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാക്കേജ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഒന്ന് കേൾക്ക്. കാരണം കാമോഫ്ലാജിന്റെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാക്കേജ്